So the government of India had issued a formal statement a few days back. I think day before yesterday for banning 59 Chinese apps which were supposedly stealing user data and providing user data to the Chinese government. So they have been banned due to security concerns, which includes TikTok and other apps, other utilities app, other utility apps, other entertainment apps, and other file sharing apps. So TikTok is one of them. So TikTok is banned along with 58 other apps. So today I am going to talk about something which is very serious regarding these apps. First of all, TikTok was an app which was stealing data. If you like it or not, I really, it doesn't matter. TikTok was stealing our data. ByteDance, the parent company which made it TikTok, the parent company for which TikTok operates, was storing our data on Chinese servers, and which was located in China. And the Chinese government had implemented a law back in 2017, which was called the uh, Chinese Patriot Act, or Chinese. Just a minute. So the law was called Chinese Chinese National Intelligence Law. So I came to know that under these law, the government of China had declared that any company, be it government or private, which has been storing user data, uh, is liable to, or is bound to provide the data to the government for let's just say spying purposes or intelligence purposes. So it was bound to give those data over to them. So yes, due to this, ByteDance, I don't know whether or not it was providing the data to the Chinese government, but it could have given uh, the user data, the bulk user data which has been stored in their data servers to the Chinese government. It could have given, or it may have given, or it can give in the future. So supposedly in India, TikTok has more than 20 crore active users in Indian country alone. So just for example, just try to understand the amount of data, the huge amount of data which is being collected by this app and which is being sold to the government of China, or given to the it's not sold actually, it's being given to the government of China. Sold means in exchange the company will get money, the company will get nothing actually. The Chinese government can just come and just take away the user data which has been stored in the ByteDance servers. And apart from that, there has been various innumerable uh, problem in the Chinese apps, like Cam Scanner, UC browser. If I remember correctly, in the year 2018, Cam Scanner was in the news because someone found that the Trojan virus, which is a very dangerous form of virus, it was found in the Cam Scanner app, and it was found to be stealing the data, stealing the user data, siphoning off the user data, and redirecting the data to an unknown server, to an unknown location. So for me personally, I have never used this app, the Cam Scanner app. I have been always be using Google's Photo Scan app. So it is a very good app. If you don't know about it, you should try it as an alternative for Cam Scanner, so it can scan the pages. So I have been never using the Cam Scanner app, but many of my friends and teachers have been using the app, and after this news, I have advised to all of them that to start using this app. So this was in 2018. Then once again, TikTok, it was previously banned, because the
the Supreme Court of India had issued a judgment that it was promoting pornography in India, so it was banned. So again it came back. So I think this ban might be or might not be permanent, but my request to all of you is stop using these type of apps. Stop using these apps. Stop using uh, any app which can possibly have the potential to breach your data. See, for example, let me give you a small example. TikTok has been using a very sensitive data of yours without your permission. Do you have any idea that TikTok can have access to your location? TikTok can have access to your regional data and obviously you might know that TikTok has access to your email ID as well, to your email ID passwords as well. Some in America, some uh, iPhone users have found okay, that the devices which were running on iOS 14, so some of the users have found out that TikTok, the app TikTok can access the even the clipboard data of the user. So clipboard का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ for those of you who don't know. So clipboard is the thing that, suppose if you are copy pasting something on your phone, if you found something on, if you need to send something to one of your friends on WhatsApp or on Facebook through message, and you don't know the information by heart, you don't have the information in your brain, so that information is written somewhere. So what you do is you copy the text and you paste it, and then you send the data to your friend or contact or someone. So the thing is, by the time you copy the text from the source to the message body, the text which has been copied has been stored in a memory called a clipboard. So it's a memory within the phone. So that data was accessed by TikTok, which is very very dangerous. Because let me give you an example. If someone needs a bank account number, so you are copying the bank account number, you are copying. So if someone needs your bank details, so you are copying your bank account number, your bank name, your name, the account holder's name, the IFSC code, and everything, and then you are pasting the thing in the body of your message, and it is being copied to your clipboard. And if TikTok can have access to that information, then just imagine how dangerous it can be. It can have a direct access to your bank, and you can do nothing about it. You are providing that data to TikTok. So my request to all of you is, प्लीज़ अगर ये ऐप अभी बैन हो गया, अगर ये लौट के भी आए, इसको पूरी तरीके से आप अवॉइड कीजिए इसको। अगर टिकटॉक आ भी जाए, आई एम श्योर आ जाएगा। ये लोग बहुत पैसे वाले, इनके पास बहुत पैसा है यार। ये लोग कुछ लॉयर वॉयर कुछ हायर करके कुछ ये लोग ये करेंगे। एक और ऐप है, एक चूतिया ऐप है जिसका नाम है शेइन, विच इज़ वेरी 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 बैड ऐप। शेइन यूज टू प्रोवाइड चीप क्लोथ्स एंड cheap accessories. Mostly all the girls, they used to have Shein app in their phones. Shein used to avoid custom duties. Shein app जो है वो ठीक तरीके से custom duty पे नहीं करता था, which was a tremendously wrong practice, extremely wrong practice, because अगर आप कस्टम ड्यूटी ठीक से पे नहीं करते हो तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को लॉस होता है। इंडियन गवर्नमेंट का जो एक रेवेन्यू होता है वो उन तक नहीं पहुंचता, और वो एक लॉस का कारण एक हो जाता है। सो शेइन जो है वो भी एक और बहुत ही घटिया ऐप था। और भी कई सारे यूसी ब्राउज़र है, उसमें काफ़ी ब्लोटवेयर एक था, शेयर इट है, वो 3 बार उल्टा सीधा कोई वीडियो रिकमेंड ही करता था। और आई डोंट नो, सो आई हैव बीन यूजिंग यूसी ब्राउज़र at some point. Now I don't use. I have been using ShareIt till date. मैं आज भी यूज़ करता हूँ। आज सुबह को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया ShareIt after the ban. I never used to have TikTok. I never used to do TikTok. I never had an account in TikTok. But some of my friends, they used to have an account in TikTok, and
some of the people I knew, they had an account with TikTok. See, the thing is, after the TikTok ban, ये जो लोग हैं ना, ये लोग ले नहीं पा रहे हैं कि TikTok बैन हो गया, and now they are reacting with violence. So they are being violent in action, or they are being violent in their words, and they are being violent, and they are in a constant state of denial. So इन लोगों से समझ, ये लोग एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि टिकटॉक बैन हो गया और इनके जो इतने सारे फॉलोअर्स हैं ये सब चले गए हैं, और ये जो हार्डनेस इनको सहनी नहीं, ऐसा ये हो पा रहा है. सी, इन दिस केस आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप एक जेन्युइन क्रिएटर हो तो आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको बुरा लगता है. इफ आई एम ऑल्सो क्रिएटर, इफ आई एम पुटिंग अप अ वीडियो विच इज़ गेटिंग एंड दैट प्लेटफॉर्म इज़ गेटिंग बैंड, सो आई विल फील बैड. बट थिंग इज़, एट द एंड ऑफ द डे, जिसके पास टैलेंट है ही विल फाइंड अ वे. आपने एक मूवी देखी होगी सीक्रेट सुपरस्टार, उसमें एक डायलॉग था कि ये जो टैलेंटेड ये जो लोग होते हैं, ये सोडे में बबल की तरह होते हैं, ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं. सो इनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म फिर से दोबारा मिल जाएगा. दे विल गेट अ प्लेटफॉर्म एंड दे विल कम अप. ओके, सो माई प्रॉब्लम वॉज विद द क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स, जो लोग गंदा गंदा वीडियो वगैरह बनाते थे और पूरा इंटरनेट में गन फैलाते थे. दे यूज्ड टू मेक इंटरनेट a very bad place. They used to make religious remarks and all that. So मेरा problem उन लोगों से है. So in a way I'm happy, but in a way I'm sad also for the genuine content creator. So TikTok बैन हो गया है, so फिर से शायद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. But my suggestion to you is, what I want to say is, why do you want to go for an app which endangers your security, or which cannot provide a basic security to you, which cannot provide the security to your data, which cannot provide security to your device. So why the hell will you go for such an app? So my suggestion is, avoid these apps. अभी बैन है, so these apps are banned now. So in a way it is good. आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन यूएस और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री में टिकटॉक इज़ कम्प्लीटली बैंड. The military personnel, they are banned from having TikTok accounts in any way whatsoever. So this shows us, so this comes to show that how dangerous these apps can be and how harmful these apps are. कि गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया, उनके देशों की गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है कि मिलिट्री वाले अगर आप हो तो आप ये ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो टिकटॉक अभी बैन हो गया है, अभी वो चला गया है, उसको रहने दो. लौट के भी है डाउनलोड, उसको जो है मत करो. आज जो है टिकटॉक बोलेगा कि ठीक है, हम लोग आपको डेटा सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम लोग जो है अब डेटा के ऊपर हम लोग ज़्यादा भी सिक्योरिटी बना रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर सिक्योरिटी. आज वो लोग बोलेंगे, वो लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा प्रोमिसेस वो लोग ये करेंगे, बट यू एंड आई वी ऑल नो दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. आपको एक और बात मैं बता दूँ, एक और फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि ByteDance ने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले 2018 में बोला था कि हम लोग जो है अपने सर्वर्स को, टिकटॉक सर्वर्स को इंडिया में लेके आएंगे, इंडिया में सारा यूज़र डेटा जो है स्टोर होएगा. लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया है, आज तक नहीं हो पाया है. इस बैन के बाद शायद वो भी सर्वर, जो सर्वर जो है वो लोग शायद इंडिया शिफ्ट करके भी लेके आए. लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि एट द एंड ByteDance is still a Chinese company, and according to the Chinese intelligence law, Chinese government can claim the user data from ByteDance and they will have to give it to them. So choose wisely, choose responsibly. जो ऐप आपकी सिक्योरिटी को एंडेंजर करता हूँ, मैंने एक बार तो पहले भी बोल दिया, अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो ऐप आपकी सिक्योरिटी को एंडेंजर कर रहा हो वो सब ऐप को उठा के फेंक दो. जो सारे काम के ऐप है, यूज़फुल ऐप है, उस सबको रखो. और काफ़ी लोग जो है वो लोग अपसेट है कि कुछ उनके इम्पोर्टेंट, कुछ उनके यूज़फुल ऐप जो वो लोग डेली काम में लाते थे, जो वो लोग डेली इस्तेमाल किया करते थे, वो ऐप बैन हो गए. तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप उन सारे ऐप्स के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढो, इंडियन अल्टरनेटिव एक ढूंढो, या फिर एक ऐसा अल्टरनेटिव
ढूंढो विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद चाइना। कुछ अल्टरनेटिव मैं ही आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग शेयर इट इस्तेमाल करो, शेयर इट एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है गूगल फाइल ट्रांसफ़र। जो गूगल फाइल्स बोल के एक ऐप आता है, उसमें ट्रांसफ़र बोल के एक ऑप्शन है, आप उसमें मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। स्नैप ड्रॉप बोल के एक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। कैम स्कैनर का अल्टरनेटिव तो है ही, आपका गूगल फ़ोटो स्कैन, और भी कई सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। गूगल में जाओ, सर्च करो और अल्टरनेटिव निकालो, और जितना हो सके इन ऐप से दूर रहो और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करो। हैविंग सेड दिस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, और अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक छोड़ देना। एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो।